serial 1. So there are 3 parts on this training today's. First is Modbus RTU communication, means serial communication. The second one is Modbus TCP communication from the IP address. And the third one is how can we debug this serial port and Ethernet port from if you don't have HMI, then how can you just use it? So we'll talk about these things, these 3 topics. So first one is Modbus RTU communication. So this one is the Modbus RTU frame format. It is basically the HMI send the request to your slave ID 04. It will be on this format in always. So first of all, always it will be a slave address, then the function code. If you know the mode scan and the Modbus poll, there will be a function code, and then the data. It available 0 up to 252 bytes, and the last two are the to register for the CRC. So whenever we just did the communication, so HMI will send this request to your slave ID in this format. So first column upon the slave address is 04. So here our slave address is 4 number, and the second one, according to this frame, our second one is the function code. So 03 is for the about this function code. The 03 is about the holding register, 04 is about the input registers, and like that all. And this bytes from here to here, it is for the data. It contains the data. So this is the start address of high byte and start address of low byte, and number of register high addresses and number of register low addresses. So this is the data frame of our request sending. And the next one is CRC. So our slave will respond like in this format. Slave will respond 04, station ID as the same. Next function code is the same. And this is the byte count. How many bytes slave response and give data to our HMI. This is byte count, and this is register value high and low. So this is the register values the HMI receive, and the last one is CRC. So ये HMI का जो है हर एक डिवाइस का एक फ्रेम रेट होता है जो मोडबस यूज करते हैं उसका. सो बाय डिफॉल्ट स्लेव एड्रेस होता है, फंक्शन कोड, डेटा की जो होती है फ्रेम, उसके हिसाब से लास्ट वन एरर चेक होता है. तो रिक्वेस्ट करता है HMI कोई भी एक स्लेव आईडी को, और स्लेव जो है वो रिस्पॉन्स करता है उसके. So this is the fundamentals of communication in the RTU format. So the second one, so these are the Modbus function codes which we are using into our HMI. So here you can see their first one is read coil, read input data and all. So according to that, this part, let me show you. This part is for bit addresses and this part is for word addresses. Whenever you use the holding register, we have to set this 4 number in our HMI side, and the third number is for the input register side. So you can see here this part is for force single coil. Okay, and so these function codes are available into here according to your coil address and holding registers. Okay, so you can refer that for your communication parameters. But this is the simple. If I sum it, and this one is for holding register, and this one is for reading the coil contact. So these two are majorly used functions in our HMI side. And the next one is the communication setup. So you have many times the same question that if HMI is a master, then what we will select into our HMI program in communication. So I told you that if your HMI is a master device and PLC or any control like PLC, or suppose you have one controller like MFM meter. Okay, this is your MFM meter.
they are slave devices. Okay, and HMI is a master. That this way you have to set into the HMI communication setting. So first of all, it is the COM port. From the COM port, you know the wiring of that pin numbers in DB9 terminal. Then you have to select a communication protocol, which is a 232 or 485 or 422. And the third one is device type. So device type is basically the Modbus. You have to select here Modbus, and the least and the last is the Modbus RTU slave wall function. You have to select this function, this portion. So basically it means that HMI is a master and it will communicate with the third party slave device. Whenever you just select this function, Modbus RTU slave function, so then our HMI will become a master and it will communicate with the slave devices. तो ये हर बार आपका एक क्वेश्चन रहता है कि HMI अगर आपकी मास्टर हो, आपका PLC हो या फिर आपका थर्ड पार्टी डिवाइस अगर स्लेव आईडी है, तो आपको HMI के अंदर कम्युनिकेशन सेटिंग में क्या सिलेक्ट करना है? तो सिंपल है कि आपको अगर आपकी HMI मास्टर है तो आपको पहले कम्युनिकेशन आपका कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है, देन आपको कम्युनिकेशन वायरिंग का 232 है, 485 4852 या 422 है वो सिलेक्ट करना है. देन यू हैव टू सिलेक्ट द मोडबस इन द डिवाइस टैब. और मोडबस सिलेक्ट करने के बाद में ये दो ऑप्शन है, ये एक और मोडबस आरटीयू मास्टर. दिस बोथ आर ऑप्शंस. अगर आपका HMI मास्टर है, याद रखो, अगर आपका HMI मास्टर है तो आपको सिलेक्ट करना है मोडबस आरटीयू स्लेव ऑल फंक्शन. इसका मतलब ये होता है कि HMI कम्युनिकेशन करेगा स्लेव डिवाइस के साथ में. HMI को मास्टर बनाना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और इसका मतलब ऐसा आता है मोडबस आरटीयू स्लेव का कि HMI कम्युनिकेशन करेगा स्लेव डिवाइस के साथ. और इसका उल्टा कि अगर आपका HMI स्लेव आई डिवाइस हो, ठीक है, और आपको HMI का डेटा कहीं पे रीड करना है, तो आपको HMI के अंदर सिलेक्ट करना है मोडबस आरटीयू मास्टर. HMI कम्युनिकेट करेगा मोडबस मास्टर डिवाइस के सामने. तो मास्टर इज अवर PLC हियर. ओके, तो आपको रेफरेंस लेना है सामने वाले डिवाइस का. अगर सामने वाला डिवाइस आपका स्लेव है तो आपको यहाँ पे स्लेव सिलेक्ट करना है, और सामने वाला डिवाइस आपका मास्टर है तो आपको यहाँ पे मास्टर सिलेक्ट करना है. So you have to take a reference all the time. If your device, third party device is a master and you want to get the data from HMI to the PLC, you have to select here Modbus RTO master. And if you want to take the data from the PLC to HMI, okay, then you have to select take the reference. It is a slave device, then you have to select it a slave. So that's the simple concept. Our HMI will communicate with the third party device. If it is a slave, then select the Modbus RTO slave function. And if you want to take data from the HMI into the PLC, then select the Modbus RTO master into the PLC, into our HMI communication interface setting. So I hope it is clear right now. And if you have any question regarding this part, कि आपको क्या select करना है, that what you have to select here. If you have no question, then we will move to the next page. Okay, so this is the RTU wiring diagram. Whenever you select this COM port communication, you can get here one wiring detail, and this is the HMI pin definition, if you know about it. So in the communication setting, the user can refer to the connection diagram and pin definition on the right side. So this is our COM pin definition. So you know our RS-485-1, our RS-485-1 pin 1 number have a pin configuration. 1 is positive and 6 is negative. Okay, 1 and 6 number for 4851. If you have a 4852, then your pin wiring, you can see here, this is the 485A1 plus and 485B1 minus. So you can see here 1 and 6 number is for 4851. So if you want to connect the new COM port and 4852, then your wiring will become a RS485. A2 plus means 7 number and 4 number. B2 minus, 485 B2 minus means 4 number. Okay, so this is for 4851 and 4852 wiring diagram for the IG series HMI, because our IG series have a two COM ports in 485, COM1 and COM2. So 1.6
is for 4851 and 7 and 4 number is for 4852. And for the 232 communication, these are the pin numbers 2, 3, and 5 number for 232 RX and 232 TX, RX and TX number. And you have to use the pin number 5 in DB9 terminal while you are communicating your HMI with another device in the 232 communication. And the last one here is for 422 RS422 TX 1, 6, and 8 and 9. These four pins are for 422 communications. So you can find the DB9 details into the communication portion in HMI. On the next one, station number setting. So one is set inside the communication settings. Two is set the station number offset when will the in the project address. Okay, so one is by default is here while you are doing a communication. One is by default. If you are you have another station ID, means station ID 2 and station ID 3, so you can change of the default station number from here. So if you have a station ID number 2, your PLC station ID is 2, then you can select here station number 2. अगर आपका PLC का स्टेशन आईडी 1 नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, कोई दूसरा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे से PLC का स्टेशन आईडी सेट करना है. And do you have any questions about the Modbus RTU related and the configurations, wiring related? Any questions? Okay. So how many? So I think our Mr. Hunter will provide you answer for that. How many devices can you communicate? And how many slave addresses can we connect? Yes. If you have a more question regarding the RTO, you can ask to the our chat box. So we will move for the TCP part. So here is the Modbus TCP communication. So like the 485, so some different are in the TCP frame format. So here is the frame format of the Modbus TCP. Slave ID inquiry. So in Modbus RTU, this type of frame rate are available in the Modbus TCP. And you can say here Modbus RTU format, and there are no CRC into the Modbus TCP communication. Okay, so it will be have a transaction ID, protocol ID, and length also while you are doing a Modbus TCP communication. So these are the differences into the Modbus TCP and Modbus RTU communication in TCP frame format. So the next one. So another important thing into the Modbus TCP communication setup. So if your HMI is a master device in LAN network, and this is the Ethernet. If your PLC have a Ethernet port and you want to communicate via Ethernet cable, okay. So what you have to select into the HMI communication configuration port. So here is the solution that go to the Ethernet communication and select the protocol Ethernet. Select the protocol Ethernet and select device type as a Modbus, and you have to select the same like HMI Modbus TCP slave all functions. So both concepts are same into the RTU and the TCP communication. That if your HMI is a master and it will communicate with any slave device, you have to select here Modbus TCP slave all function. And suppose here your HMI is a slave device and you want to take the HMI data into the PLC, which is a master, then you have to select here Modbus TCP master. So this is the same setting as per the RTU into the TCP communication. So the next port, so the next thing is wiring setup.
This is our last topic today's that serial port debug tool. How can you do the online simulation if you don't have a HMI? Still, you want to check the communication, which is okay with your PLC and your RTU connection. And how can you just test it? अगर आपके पास में HMI नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको टेस्ट करना है कि आप आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो और प्रोटोकॉल सही है या नहीं, आपको वैल्यूज चेक करना है तो आप कर सकते हो ऑनलाइन सिमुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट डिबग टूल है हमारे पास में, ऑनलाइन सिमुलेशन करके आता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वायरिंग सेटिंग यू कैन हेल्ड, make sure the HMI PLC is connected successfully. Okay, so this way you can check the data. Suppose here you have a one device, okay, PLC, and you want to check their data into the HMI, but it is not communicating. Still, you want to debug where is the problem. So you can do the online PC debugging tool. Okay, so you can use the PC debugging tool instead of. So this is the Modbus poll, Modbus poll and mode scan. Okay, so you can read the direct data of this PLC into our Modbus poll and check where is the problem. You can do it also in PI Studio. Instead of this debug tool, you can use a PI Studio and can do a online simulation. Okay, in PI Studio we have one option regarding online simulation, so you can also check it from here. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपका कम्युनिकेशन का सेटिंग है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जब आप USB to 485 केबल लगाओगे, ठीक है, USB to 485 सीरियल कन्वर्टर, तो आपको एक कॉम्पोर्ट जनरेट होगा आपके डिवाइस मैनेजमेंट टूल में। लेट मी जस्ट शो यू। तो this one, there are two methods. So whenever you are just connecting a COM port, it will show it like this. So this port is connected into the COM number 4. Okay, तो आपके पीसी के अंदर एक कॉम पोर्ट बन जाता है और वहां से आप ऑनलाइन सिमुलेशन करके या फिर मोडबस पोल के अंदर आप आपके पहले डिवाइस का डेटा चेक कर सकते हो कि आपका सब कुछ जो भी है, डेटा फॉर्मेट, लेंथ, एड्रेस, एड्रेस टाइप, वो सही है, करने सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप मोडबस पर पे पहले चेक कर सकते हो डेटा को, उसके बाद में पीआई स्टूडियो में सेम सेटिंग करके ऑनलाइन सिमुलेशन में भी चेक कर सकते हो। अगर आपका पीएलसी और एचएमआई अगर वो दोनों लैन के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप मोडबस पोल या फिर मोड स्कैन के अंदर ऑप्शन आता है कि आप टीसीपी आईपी करके भी चेक कर सकते हो। तो दिस आर द पीसी डिटेक्शन मेथड्स। तो ये सारे जो मेथड है वो पीसी डिबगिंग की है। So you have to check your data first on these tools and then try to onto the PA Studio and on a hardware of HMI. Do you have any question regarding the online simulation or this debugging tool? You can ask to our group. Okay. हेलो Yes, sir. सर, एक डाउट था। या पूछिए। जैसे टीसीपी आईपी पे हमारी दो पीएलसी है विकॉन की, हाँ। तो क्या हम उनको दोनों को सेम पोर्ट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं? अ, आपकी दो पीएलसी है, ठीक है, और 485 हाँ। के ऊपर है। नहीं, टीसीपी आईपी को कम्युनिकेट करना है। टीसीपी आईपी के ऊपर आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो हाँ आपको जी। दो आईपी डिफरेंट आईपी एड्रेस रखना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ। स्विच के अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं, और एचएमआई में जो हम कम्युनिकेशन में सिलेक्ट करते हैं वहां पर हमारा एक पोर्ट आता है एथरनेट। हाँ, हाँ, आप तो वहाँ वहाँ। पे दूसरा क्रिएट कर सकते हो, सर। अ, यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट हाँ, यहाँ पे। बस तो हियर, यहाँ पे आप देख हाँ। सकते हो कि यहाँ पे मेरा अपने इथरनेट जो सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे पीएलसी का एक आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके, तो ये नाम से है ना, ये नेम से आपका कॉम्पोर्ट 1 जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। और वहां पर आपको सिलेक्ट करना है आईपी एड्रेस। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के अंदर सिलेक्ट करने का आईपी एड्रेस आता है वो फर्स्ट पीएलसी का आएगा, ठीक है। फिर ओके। दूसरी बार आपको वहां पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे दूसरी बार ऐड ओके। करोगे तो फिर से वो पॉपअप करेगा ऐसा विंडो, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस।
फिर यहाँ पे आपको ओके नेम को चेंज कर देना है, ठीक है। और नेम को चेंज ओके करने के बाद में आपको ओके दबाना है। फिर वहाँ पे आप आपका दूसरा पीएलसी का आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो। ओके। ओके ऐसे ओके हमारे आईजी के अंदर आई थिंक इन न्यू न्यू सॉफ्टवेयर यू कैन कनेक्ट द 32 डिवाइसेस, ओके, इनटू द टीसीपी आईपी। तो ऐसे आपके ओके बेकॉन के 3200 या फिर सीमेंस के 3200 ना, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आप क्रिएट कर सकते हो इथरनेट पोर्ट को बारी बारी से। एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना है उसके अंदर सेट कर दिया, फिर वहाँ फिर दूसरी बार आपको ऐड करना है इथरनेट का पोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे टीसीपी आईपी के इसका नाम आपको चेंज करना है, वरना ये आपको सिलेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हाँ नेम सर, वो लास्ट टाइम नहीं हो रहा था, वो ऐड नहीं हो रहा था, वैसे मैंने किया था। यहाँ पे आपने एक ही गलती की होगी, यहाँ पे आपने नाम चेंज नहीं किया होगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये नाम चेंज करके ट्राई करना, वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। So थैंक यू you सर। can, yes, thank you, sir. Welcome. So you can create here a multiple, you can create here a two PLCs onto the Ethernet by adding this COM port again and again. So it will be supported up to a 32 in in our HMI. Let's move to the next part. So this way, and this is there's a method. There's a debug tool. Open the debug tool and select the port number. Yeah, I'm just selecting the port number and set up the communication parameter. This is the communication parameter and click to the OK. And you can also select here a connection method and go to the connect. And you can again set if there is an issue, you can select your data from here. तो ये आपको सेटिंग करना है मोडबस स्लेव के ऊपर. So if you are communicating and with any slave devices, then you have to set your parameters like that. So this is the use of the Modbus tool. That's it. And you can also check the message format whether it is correct or not into the you can see the communication traffic into the Modbus port. So this way you can check कि ऑनलाइन सिमुलेशन में आपका डेटा आ रहा है या ना फिर नहीं आ रहा है आपके डिवाइस. So I think this is the. So if you want to review the course, please go with. अगर आपको Modbus communication कैसे set करना है, if you want to see a video, you can refer to this link. There's a YouTube video. It is available into our WECON technology site, into YouTube channel. You can go there and select it. And if you want to download the RTU demo, please go with this link. And if you want to download the TCP demo, then please go with this link. यहाँ पर सारे डेमोस अवेलेबल है. HMI सीरियल में हो तो उसका एक डेमो, अगर HMI को आपको TCP IP कम्युनिकेशन करना है तो उसका डेमो अवेलेबल है. वीडियो भी एक अवेलेबल है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो पीपीटी डाउनलोड कर करके.